guys, welcome to part 2 of chapter 5 strategy implementation, evaluation and control of SM. तो शुरू करते हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कंसर्न है विद मैनेजरल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग अ फ्रेशली इनिशिएट मतलब फ्रेशली चोजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। मतलब स्ट्रैटेजी को जो है एक नई स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसको हमको एक्शन में लाना इज बेसिकली स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन इज बेसिकली आई एम ऑल्सो राइटिंग इन माई नोट्स, सो इसलिए थोड़ा सा गैप रह रहा है। मैनेजरियल एक्सरसाइज है, ठीक है, ऑफ पुटिंग अ फ्रेशली चोजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। फ्रेशली चोजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, ठीक है। ये डील्स करता है मैनेजर एक्सरसाइज ऑफ सुपरवाइजिंग द ऑनगोइंग परस्यूट ऑफ स्ट्रैटेजी, मेकिंग इट वर्क, improving the competence with which it is executed, and make sorry and showing measurable progress in achieving the targeted results. So manager exercise of supervising the ongoing pursuit of strategy, making it work, improving the competence with which it is executed, and showing measurable progress in achieving the targeted results. तो मैनेजर एक्सरसाइज है पुटिंग अ फ्रेशली चोजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, मैनेजर सुपरवाइज करना ऑनगोइंग परस्यूट ऑफ स्ट्रेटजी को, मेकिंग इट वर्क, इम्प्रूव करना कंपिटेंस विद विच इट इज एग्जीक्यूटेड, शो करना मेजरेबल प्रोग्रेस इन अचीविंग द टारगेट रिजल्ट। अब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना कंसर्न है विद ट्रांसलेटिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इनटू एक्शन। तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन को एक्शन में ट्रांसलेट करना, which presupposes that the decision itself, that is the strategic choice, was made with some thought being given to feasibility and acceptability. The allocation of resources to new courses of action will need to be undertaken, and there may be a need for adapting the organization structure to handle new activities as well as training personnel and devising appropriate systems. अब रिलेशनशिप क्या है विद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस। तो बहुत सारे मैनेजर्स है ना वो फेल मतलब नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन को और इम्प्लीमेंटेशन को, और ये क्रूशियल है टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू बिकॉज दे बोथ रिक्वायर वेरी डिफरेंट स्किल्स। ऑल्सो कंपनी विल बी सक्सेसफुल ओनली when the strategy formulation is sound, strategy formulation जो है sound होगा और जो implementation है वो excellent होगा, ठीक है। There is no such thing as successful strategic design. This sound obvious, but in practice the distinction is not always made. Often people blame the strategy model for the failure of a company while the main flaw might lie in failed implementation, ठीक है। Thus, organization success is a function of good strategy and proper implementation. मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है ना जो डिपेंड करेगी कि हमने जो स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉर्मुलेट किया, मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, दैट इज गुड स्ट्रैटेजी। और गुड स्ट्रैटेजी बनाने से क्या होगा जब हम उसको इम्प्लीमेंट ही ना करें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी फॉर सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The matrix in the figure below represents various combination of strategy formulation and implementation. तो ये है ना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का मैट्रिक्स है ना, जो जैसे कि बेसिकली मैं समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक फॉर्म है ए, मतलब चार फॉर्म्स है ए बी सी डी, ठीक है। तो जो ए फॉर्म है ना वो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट तो बहुत अच्छे से करती है, बट उस इम्प्लीमेंटेशन में एकदम वीक है। मतलब कि अच्छी स्ट्रैटेजी बना रही है, जैसे कि हम लोग बहुत अच्छा प्लान्स बनाते हैं कि हम ऐसे पढ़ाई करेंगे वैसे पढ़ाई करेंगे, बट जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते यार। सो बहुत कम ही लोग जो टॉपर्स होते हैं वही कर लेते होंगे शायद। तो ये समझ सकते हैं कि ये हमारे जैसे बच्चे हैं मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये वो बच्चे हैं टॉपर स्टूडेंट्स जो अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं बढ़िया तरीके से। तो और जो सी है वो एकदम ही बेकार है, ना तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना वो पढ़ते हैं। और डी वाले स्ट्रेटेजी बनाने में तो अच्छे नहीं है बट इम्प्लीमेंट करने में एक्सपर्ट है। तो हम इसको आगे अब ब्रीफ में और ट्रीट करते हैं। सो
The above mentioned figure depicts the distinction between sound and flawed strategy formulation and excellent and weak strategy implementation. स्क्वायर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो फॉर्मुलेशन है ना, बट डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट में. फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव strategy, but it is showing difficulties in implementing it successfully. This can be due to various factors. ये बहुत सारे reasons की वजह से होता है, जैसे lack of experience, lack of resources, missing leadership and so on. Experience में lack, जैसे कि स्टार्टअप्स है तो फिर, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं है ना, या फिर मिसिंग लीडरशिप सो ऑन. तो कॉम्पिटिटिव वेरी फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बट डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुली स्क्वायर ए में, ठीक है, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज. अब ऐसी सिचुएशन में ना, the company will aim at moving from square A to square B, obviously na, given they realize their implementation difficulties. Square B एक ideal situation है जहाँ पे भाई formulation भी बहुत सही हो रहा है और implementation भी बहुत सही हो रहा है, दोनों में successful है. जहाँ पे company has succeeded in designing a sound and competitive strategy and has been successful in implementing it. Ideal situation भाई, ये सिचुएशन पे होना इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस. सक्सीड किया उसने अपने डिज़ाइन करने में भी, साउंड और कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को, और फिर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया. अब स्क्वायर डी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फॉर्मुलेशन जो है फ्लॉड है, मतलब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं हुई, बट एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, ठीक है. वेयर द कंपनी व्हेन स्क्वायर डी इज द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज रीडिजाइन देयर स्ट्रेटजी बिफोर रीएडजस्टिंग देयर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली अच्छे से कर ही पा रही है ना, तो रीडिजाइन करनी पड़ेगी उसको अपनी स्ट्रेटजी को. जहाँ अब स्क्वायर सी ऐसा है जहाँ पे कहीं पे भी कंपनी ने सक्सीड नहीं करा, ना स्ट्रैटेजी बनाने में ना उसको एक्शन में लाने में. तो स्क्वायर सी that haven't succeeded in coming up with the sound strategy formulation and in addition are bad at implementing their flawed strategic model. इनको अपनी implementation और execution में भी readjustment की ज़रूरत है. Taken together, all of the elements of business strategy, it is to be seen as a chosen set of actions by which by means of which a market position relative to the competing enterprises is sought and maintained. This gives us the notion of competitive position. Um it needs to be emphasized that strategy is not synonymous with long-term plan, but rather consists of an enterprise attempts to reach some preferred future state by adapting its competitive position and circumstances change. While a series of strategic moves may be planned, competitors' actions will mean that the actual moves will have to be modified to take account of those actions. In contrast to this view of strategy, there is another approach to management practice. In contrast to this view of strategy, there is another approach to management practice which has been followed in many organizations. In organization that lack strategic decision, there has been tendency to look in times inwards in time of जहाँ पे जो organization जो lack करती है strategic direction में, तो वहाँ पे there has been tendency to look toward inwards in times of stress and for management to devote their attention to cost cutting and to shedding unprofitable divisions. In other words, the focus has been of efficiency. Focus जो है efficiency पे है. That is relation between inputs and outputs, usually with the short time horizon, rather than on effectiveness. तो focus है efficiency पे rather than on effectiveness, which is concerned with the attainment of organizational goals that including that of desired competitive position. While efficiency is essentially introspective effort highlights the, अब यहाँ पे effectiveness और इसका हमको principal combinations of effectiveness इन्हें, अब जहाँ पे जो organization है ना, effective और efficient दोनों है तो thrive है. effective है लेकिन efficient थोड़ी कम है तो वो survive कर सकती है. अब ineffective है, inefficient है तो जल्दी से मर जाओ भाई, ख़त्म करो खुद को. और जहाँ पे efficient है लेकिन ineffective है तो वो धीरे धीरे die हो जाएगी.
effective, efficient, thrive. इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, देन इट कैन सर्वाइव, राइट. इनफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट है तो धीरे धीरे मरेगी, और दोनों ही नहीं है तो भाई जल्दी मरो, डाई क्विकली. An organization that finds itself in cell 1 is well placed and thrives since it is achieving what it aspires to achieve, is doomed unless it can establish some strategic direction. The particular point notes the worst place to be then in cell. In crude terms, to be effective is to do right thing, while to be efficient is to do the thing right. सही चीज करना is what effective, and सही तरीके से करना is efficient. Right thing, effective is to do the right thing, while while to be efficient is to do the right thing. Thing right, sorry. An emphasis on efficiency rather than on effectiveness is clearly wrong. But who determines the effectiveness? An organization can be portrayed as a coalition of diverse interest groups, each of which participates in the coalition in order to secure some advantage. This advantage or inducement may be in the form of dividends to shareholders, wages to employees, business to suppliers or satisfaction consumers, legal compliance from the viewpoint of government, responsible behavior towards society, and so on. Even the most technically perfect strategic plan will serve little purpose if it is not implemented effectively. अब इसका डिफरेंस दे रखा है. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एम्फोसाइज करता है इफेक्टिवनेस पे, ये एम्फोसाइज करता है एफिशिएंसी पे. ये एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ऑन स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल decisions, placing the forces before action, managing forces during the action, related involves all those mean relating to executing the strategic plans, involves planning, decision making. सो पहले तो 4 पॉइंट हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के पढ़ती हूँ, फिर 4 इम्प्लीमेंटेशन के पढ़ती हूँ. नहीं, या तो ऐसे वो करते हैं डिफरेंस करके पढ़ते हैं, ठीक है चलो. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में इंक्लूड होता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी एंड गोल. इंक्लूड करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को, ठीक है. और इन्वॉल्व होता है इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड प्लान्स. फिर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इन्वॉल्व करता है ऑल दोज मीन्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजिक प्लान्स. ये तो डेफिनेशन है कि ये इंक्लूड करता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक गोल. और ये सारे मीन्स जो रिलेटेड टू एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान को. Formulation is placing the forces before the action, placing the forces before the action, and managing forces during the action is implementation. ये in entrepreneurial activity है based on strategic decision making, और ये एक administrative task है based on strategic and operational decisions. Administrative task based on operational based on strategic and operational decisions, और ये entrepreneurial activity है based on strategic decision making. फॉर्मुलेशन जो एम्फोसाइज करता है इफेक्टिवनेस पे और इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी पे. ये इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस है और इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशनल प्रोसेस है. इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल इज
Formulation and operational is implementation. ये requires coordination among middle and lower level implementation and top level पे formulation. Requires greater deal of initiative, logical skills, conceptual initiative and analytical skills, specific motivational and leadership traits. Requires specific motivational and leadership traits, initiative, logical skills, conceptual initiative एंड एनालिटिकल स्किल्स प्रिसीड करता है और ये फॉलो करता है, ठीक है। ये डिफरेंस हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ linkages and issues in strategy implementation. Noteworthy is the fact that while strategy formulation is primarily an entrepreneurial activity based on strategic decision making, the implementation of strategy is mainly an administrative task. So, forward linkage. The different elements in strategy formulation started with different elements to strategy formulation में है, starting with objective setting through environmental and organization appraisal. Strategic alternative choices to the strategic plan determine the course that an organization adopt for itself. So different elements strategy formulation start होते हैं from objective setting through environmental and organization appraisal फिर strategic alternative and choice to the strategic plan जो determine करेगा course of action that an organization adopts for itself. तो with formulation of strategy के साथ या sorry with formulation new strategy का formulation या फिर reformulation existing strategy का जो है
Issues in strategy implementation. This section focuses on the various issues involved in the implementation of strategy. The different issues involved in strategy implementation cover practically everything that is included in the discipline of management studies. Therefore, has to bring a wide range of knowledge, skills, attitudes, and abilities. The implementation tasks put to test the strategy's abilities to allocate resources, design organizational structure, formulate functional policies, and to provide strategic leadership. The strategic plan devised by the organization proposes the manner in which the strategies could be put into action. Strategies by themselves do not lead to action, they are in sense statement of intent. Implementation tasks are meant to realize the intent, therefore, activated should lead to formulation of different kind of programs. A program is a broad term which includes goals, policies, procedures, rules, and steps taken to putting a plan into action, usually supported by funds allocated for प्लान इम्प्लीमेंटेशन तो स्ट्रैटेजीज जो है लीड करती है टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जो इंक्लूड करता है गोल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन इन पुटिंग अ प्लान इन टू एक्शन स्टेप्स टू बी टेकन इन पुटिंग अ प्लान इन टू एक्शन प्रोग्राम्स जो है यूजुअली सपोर्टेड होता है बाय फंड्स एलोकेटेड फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन. Programs lead to formulation of project. A project is a highly specific program for which the time, schedule, and cost are predetermined. It requires allocation of funds based on capital budgeting by organization. May consist several projects, each of which is intended to achieve a specific and limited objectives, requires separate allocation of funds, and is to be completed with a set of time schedule. Implementation of strategy is not limited to formulation of plans, programs, and projects. Projects would also require resources. After resources have been provided, it would be essential to see that the proper organizational structure is designed, systems are installed, functional policies are devised, and various behavioral inputs are provided so that plans may work. Given below in sequential manner, the issues in project implementation, procedural, resource allocation, structural, functional behavior. It should be noted that the sequence does not mean that each of the above activities are necessarily performed one after another. Many activities can be performed simultaneously. Certain other activities may be repeated over time. And there are activities which are performed only once. Thus, there can be overlapping and changes in the order. तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और बचा हुआ टॉपिक्स जो भी है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ गाइस. और जितना हो सके यार शेयर करो चैनल को. पता नहीं क्या हो गया चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे मेरे. मुझे ऑल्सो लेट मी नो कि मैं ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फॉर्मेट है ऐसे पढ़ाऊँ या फिर जो जिसमें मैं बुक हो और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फ्रॉम कैमरा वैसा करूँ. कि ये स्क्रीन शेयरिंग वाला प्रोसेस या फिर नॉर्मल जिसमें मैं पेन से लिख रही हूँ या ऐसा सब जो मेरा पहला वाला फॉर्मेट था. मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन शेयरिंग वाले फॉर्मेट्स में इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अभी. आई डोंट नो बहुत टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं करने की वजह से हो रहा है या क्या. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो यार. मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए. बाय बाय.